Good morning everyone. I am welcoming all the students of class 2. Today we are going to start English class, English Carnival. Please check out the English Carnival book, chapter 10. Chapter 10, page number 70. To buy a handkerchief. Oh, okay. To buy a handkerchief. We use handkerchiefs for a हम लोग हैंकरचिप्स क्यों यूज़ करते हैं टू ड्रा हम लोग जब हाथ धोते हैं वी यूज़ टू यूज़ हैंकरचिप्स ओके नाउ टू बाय अ हैंकरचिप दिस इज अ शॉर्ट पोएम चैप्टर 10 वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड एक दिन क्या हुआ था माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड उनको वो बीमार हुआ था कोल्ड ठंड लग गया था उनको ही वेंट टू बाय अ हैंकरचिप्स नाउ A mighty elephant went to buy a handkerchief. Elephant hanky खरीदने गया दुकान में, okay? Where handkerchiefs were sold. जहाँ पर handkerchiefs मिलता है, जहाँ पर handkerchiefs खरीदते लोग. A hanky for an elephant. The sales girls was surprised. Now hanky for an elephant. आप लोगों ने देखा है elephant को hanky खरीदे? You saw anyone? No. Elephant does not use handkerchiefs, but this elephant went to buy a handkerchief. Then the sales girl जो दुकान पे थी वो लड़की shocked हो गई surprised. She was so surprised that elephant came to buy a handkerchief. Now, sorry sir, but we don't have a handkerchief that size. Now the sales girl said, sorry sir, we don't have that size of handkerchiefs. हम लोग के पास आपके साइज के handkerchiefs नहीं है. So oh, achoo, a handkerchief that size, achoo, said the elephant. Now, elephant say achoo, and shocked his mighty head. Forget about the handkerchiefs. Give me a sheet instead. Now, elephant say achoo. जब आपको कोल्ड लगता है तो क्या होता है हचिंग आता है. So, elephant ने भी किया achoo. Forget about the handkerchiefs. Now give me the sheet instead. Sheet मतलब बेड शीट जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं होम घर पे. So elephant take the bed sheet from the sales girl. Okay, because there is no handkerchiefs of elephant. Elephant के size का handkerchief वहाँ पर नहीं था. And shocked his mighty head. Oh, there is no handkerchiefs. Forget about the handkerchiefs. Give me a sheet. बेड शीट गिव मी अ शीट इंस्टेड उसके बदले में मुझे क्या दीजिए बेड शीट शीट दीजिए शीट मतलब बेड शीट ओके बेड शीट साइड का हैंकरचीफ दीजिए ओके सो वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड एक दिन क्या हुआ हाथी को बुखार जुकाम लग गया कोल्ड सो एलिफेंट वेंट टू बाय अ हैंकरचीफ देन अ सेल्स गर्ल वाज सरप्राइज्ड that elephant came to his shop and he wants to buy a handkerchief. But the sales girl, what sales girls do? Sales girls tell, sorry sir, we don't have handkerchiefs. Because elephant is so big. Elephant कितना बड़ा होता है और handkerchief बहुत छोटा होता है. So when we feel cold, when we feel dirty, we used to use handkerchiefs. So elephant also want to use handkerchiefs because he is feeling so cold. Now what elephant do? Forget about the handkerchief. Give me a sheet instead. उसने क्या बोला मुझे handkerchiefs के बदले में एक sheet दीजिए. Instead of handkerchiefs you can give me a sheet. So this is a short poem about a mighty elephant who is going to buy a handkerchiefs. Okay, so you can do this in your copy. Do this poem in your copy, school copy. We have finished the poem. Handkerchiefs is compulsory for us. Handkerchiefs क्या है सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको पसीना आता है आपका चोट लगता है तो आप क्या करते हैं हैंकरचीफ्स यूज़ करते हैं राइट सो हैंकरचीफ्स भी एक हम लोग बचपन में व्हेन वी आर अ चाइल्ड सो वी यूज़ टू यूज़ हैंकरचीफ्स आपके यहाँ नोज़ में डर्टीज होता है सो आप लोग क्या यूज़ करते हैं हैंकरचीफ्स सो एलिफेंट ऑल्सो वांट टू यूज़ हैंकरचीफ्स दिस इज द स्टोरी ऑफ हैंकरचीफ्स ओके mighty what is mighty having great strength strong sales girl a lady who sells things in a shop sales girls means
जो दुकान पे लड़की दुकान पे रहती है लड़की, जो सामान देते हैं उसका हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स गर्ल. अहो, अच्छू, द साउंड मेड व्हेन अ पर्सन स्नीज. स्नीज, जब आपको हचिंग नोज से कुछ होता है तो आप हचिंग करते हो. तो द साउंड्स when someone made a sneeze. शीट मीन्स अ बेड शीट. अ बेड शीट जो आप बेड पे यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेड शीट. ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स. Mark true or false. Once a tiny elephant got a mighty cold. Not a tiny, mighty elephant got a. Once a tiny elephant got a mighty cold. So means once a mighty elephant got a mighty cold, not a tiny elephant. Okay, so this is false. The elephant went to buy a handkerchief. Yes, elephant went to buy a handkerchief. The sales girls at the shop was surprised because elephant came to his shops. So she was so surprised. The shops had a handkerchief the size of an elephant. No, the shop does not have the handkerchiefs of elephant size. The elephant bought a handkerchief. No, the elephant bought a bed sheets. Now choose the right answer. The mighty elephant had a fever, had a headache, or a mighty cold. The mighty elephant had a mighty cold. उनको क्या हुआ था? Mighty cold. The elephant went to a doctor, a shop, or theatre. The elephant went to a shop to buy a handkerchief. The sales girl said that they did not have a handkerchief for an elephant, trouser for an elephant, a shirt for an elephant. A sales girl told that he don't have handkerchiefs for an elephant. उनका पास elephant के लिए handkerchiefs नहीं है, क्योंकि handkerchiefs लोग यूज कर सकते. Person use that, people use the handkerchiefs, but elephant does not use the handkerchiefs. Okay, so this is the exercise work. You have to do in your copy. Exercise A, exercise B. This is your homework. Now, why should we use the handkerchiefs when we have a cold? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे, why should we use handkerchiefs? Handkerchiefs हम लोग क्यों यूज करते हैं? So why? You have to write yourself. When you have a cold, discuss in class. You can discuss with your sister, with your brother, and write your answer in your copy. So this is the homework. Exercise A, exercise B, and exercise C. Why we should use handkerchiefs when we have a cold? Why? So you can give the answer and you can write in your copy. For today this much. Thank you. Have a good day.